Welcome to all of you on Grow Strong, dear students and other fellow listeners. Hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme Educational Measures for Visually Impaired Children. As we know that education is the fundamental right or birthright of every child. It means we have to put every child in the stream of education without any type of discrimination. Discrimination on the basis of caste, religion, gender, color, creed, by and large disability. अगर हम 50 साल पीछे चले जाएंगे, it was very difficult to provide the education to the disabled community. There was the exploitation towards the disabled population because education was only fulfilling the needs and requirements of normal population. Due to the advancement in science and technology. Now dear students, अगर हम आज की बात करेंगे, change is the law of nature. Everything and every element undergoes change. Tremendous change has brought in the field of science and technology. That is why right now, this is the scientific age. Education system does not only fulfilling the needs and requirements of normal children, but also disabled population as well. In today's lecture, we will focus purely on various educational measures designed for the visually impaired children. Number 1, Braille instruction. Braille instructions should be provided to the visually impaired children. Therefore, it is the responsibility of Braille instructors that to educate or provide the knowledge about the Braille books to the visually impaired children. Visually impaired बच्चों को ब्रेल बुक्स के रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह से वो ब्रेल सिस्टम से अपने एजुकेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं. As we know that Braille system of education is that system of education which is based on sense of touch. यानी कि सेंस ऑफ टच के जरिए ब्रेल कंटेंट को या हम कह सकते हैं ब्रेल बुक्स को रीड किया जाता है. नंबर 2, लार्ज प्रिंट मटेरियल्स. डियर स्टूडेंट्स, विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए प्रोविजन होना चाहिए लार्ज प्रिंट मटेरियल बिकॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ विजन. इनमें लॉस ऑफ विजन होता है, ये नॉर्मल फॉन्ट साइज कंटेंट नहीं रीड कर पाते हैं. नॉर्मल फॉन्ट साइज मीन्स 12 फॉन्ट साइज. दैट इज व्हाई देयर शुड बी द लार्ज प्रिंट मटेरियल एंड इट हैज रिकमेंडेड विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए फॉन्ट साइज होना चाहिए ईदर 14 और 16. 14 और 16 फॉन्ट साइज बिगर फॉन्ट साइज माना जाता है और विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए आसान होता है, एस्पेशली पार्शियली साइटेड एंड लो विजन विजुअली इंपेयर्ड लर्नर्स टू रीड द 14 or 16 font size. Number 3, audio books and audio resources. Dear students, visually impaired children में डिफेक्टिव सेंस ऑफ विजन होता है और इनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग होती है
It is very much sharp and quite normal. That is why visually impaired children should provide it. Audio books. Apart from audio books, there should be also the provision of talking calculators. Talking calculators are those calculators by which visually impaired children learn the calculation. यानी कि टॉकिंग कैलकुलेटर्स से हम इनकी मैथमेटिकल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. नंबर 4, tactile learning resources. Tactile learning resources are those resources which can be learned with the help of touch. जिस चीज को हम या रिसोर्स को हम लर्न कर पाते हैं टच से, दैट इज नोन एज टैक्टाइल रिसोर्स. क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड बच्चों में डिफेक्टिव सेंस ऑफ साइट होता है, एंड दीज चिल्ड्रन पॉजेसेस 2 प्रोमिनेंट सेंसेस. उनकी 2 सेंसेस स्ट्रॉन्ग होती है, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ हियरिंग. डियर स्टूडेंट्स, विजुअली इंपेयर्ड बच्चों की टैक्टाइल सेंस, आई मीन टू से यू सेंस ऑफ टच, ये स्ट्रॉन्गर होती है as compared to the normal children. That is why we should provide them resources which are based on touch. टच के जरिए ये अच्छी तरीके से और स्मूथली लर्न कर पाते हैं. इसीलिए there should be the provision of tactile resources like Braille books, Braille playing cards, Braille clocks and watches, tactile 3-dimensional puzzles, tactile maps, tactile graphics, and tactile learning kits. Number 5, accessible computer and science labs. There should be the provision of computer and science laboratory for visually impaired children. Lab and laboratory should be based on adaptive technology. Adaptive technology is that technology which supports to the disabled community to fulfill their needs and requirements. इसीलिए अगर हमें लेबोरेटरी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को, तो जो भी एपरेटस होगा, डिवाइसेस लैब में होंगे या पूरा गैजेट सिस्टम, all should be based on adaptive technology. For instance, talking lab thermometers, Braille labeled beakers, tactile models of molecules, audio pH meters, talking colorimeters. Talking colorimeters are actually those devices जिनसे हम कलर एनालिसिस कर पाते हैं. आई मीन टू से यू विजुअली इंपेयर्ड बच्चे कॉलरीमीटर से, टॉकिंग कॉलरीमीटर से कलर एनालिसिस कर पाते हैं. टॉकिंग बैलेंस स्केल्स, ब्रेल लेबल्ड केमिकल लेब्स, यानी कि लेब्स में जो भी केमिकल्स होंगे उन पे ब्रेल लेबल होनी चाहिए. ब्रेल लेबल के जरिए वो सेंस ऑफ टच से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं केमिकल्स को, चाहे केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ईथर होगा, एस्टर होगा या कोई और एसिड होगा. एक्सेसिबल लाइब्रेरी रिसोर्सेज. विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए लाइब्रेरी रिसोर्सेज भी होनी चाहिए. आई मीन टू से यू इनरिचड लाइब्रेरी, जहाँ पर हर कोई बुक या रेफरेंस बुक मौजूद होगी. अपार्ट फ्रॉम इट, journals and magazines. That is why preferably visually impaired बच्चों के लिए रिकमेंड की गई ई लाइब्रेरी. इसीलिए इनके लिए ई मैगजीन्स आते हैं, ई बुक्स आते हैं, ई रेफरेंस बुक्स आते हैं, ई जर्नल्स आते हैं. नंबर 7, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान. डियर स्टूडेंट्स, विजुअली impaired population is sensitive population. They possesses defective sense of sight. विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को
अपनी यूनिक और स्पेसिफिक नीड्स होती है। इन ऑर्डर टू फुलफिल दियर यूनिक नीड्स, या हम कह सकते हैं इंडिविजुअल नीड्स, दैट इज वाई इंडिविजुअल अटेंशन शुड बी पेड, ताकि इनकी नीड एंड रिक्वायरमेंट आसानी के साथ फुलफिल हो जाएगी। स्पेशलाइज्ड टीचर्स, dear students, regular teacher cannot truly teach to the visually impaired children. इसीलिए इन्हें वो टीचर पढ़ाना चाहिए who has having complete knowledge, I mean to say you through and through knowledge about the special education. वेल ट्रेन्ड टीचर होना चाहिए जिसे एक्सपर्टाइज होगी विजुअल इंपेयरमेंट में, किस तरह से विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंगली उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म एक टीचर में होना चाहिए। नंबर 9, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग। विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को ओरिएंटेशन देनी है और मोबिलिटी ट्रेनिंग देनी है। विद द हेल्प ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग वी कैन डेवलप द स्किल कॉम्पिटेंसी among the visually impaired children. For example, traveling skill. Visually impaired बच्चों को ट्रैवल करना नहीं आता है, लेकिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के जरिए, बाय एंड लार्ज मोबिलिटी ट्रेनिंग के जरिए हम इन्हें ट्रैवल सिखा सकते हैं। हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू स्कूल और स्कूल टू होम, या किस तरह से ये सोसाइटी में ट्रैवल कर पाते हैं, या सोसाइटी से बाहर इन्हें कहीं जाना है, किस तरह से ये इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह से वी कैन डेवलप अदर स्किल्स सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर टास्क्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चे जो है ये किस तरह से इंडिपेंडेंटली टास्क्स को परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली दोज टास्क्स विच दे हैव टू परफॉर्म इन डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, बाथिंग, नहाने की ट्रेनिंग इन्हें देनी है। ड्रेसिंग, मेंटेनिंग ओवरऑल हाइजीन, अपार्ट फ्रॉम इट कुकिंग, किस तरह से ये इंडिपेंडेंटली कुक कर सकते हैं, या रिक्रिएशन एंड अदर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज। नंबर 10, क्लासरूम मॉडिफिकेशंस। डियर स्टूडेंट्स, विजुअली इंपेयर्ड बच्चे नॉर्मल क्लासरूम में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। We cannot truly teach to the visually impaired children within the normal classroom because they possess defect in the sense of sight. Visual impairment की वजह से ये नॉर्मल क्लासरूम में नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए क्लासरूम्स को मॉडिफाई करना है, ऑल्टर करना है। फॉर इंस्टेंस, इनके क्लासरूम्स में प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, क्लासरूम जो है वो वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर रेगुलर टीचर को कोई विजुअली इंपेयर्ड बच्चा या बच्चे क्लासरूम में है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दोज चिल्ड्रन जिनकी आई साइट की प्रॉब्लम है, जिनमें विजुअल इंपेयरमेंट का इशू है। वो उन बच्चों को फ्रंट बेंच पे बिठाए ताकि वो भी लर्न कर पाएंगे नॉर्मल बच्चों के साथ। तो नटशेल में हम कह सकते हैं देयर शुड बी द क्लासरूम मॉडिफिकेशन। नंबर 11, अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स। डियर स्टूडेंट्स, हाउ वी विल असेस विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन। असेसमेंट मीन्स टू चेक द नॉलेज ऑफ विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन, इन्होंने कितना गेन किया है और अभी कितना इन्हें गेन बाकी करना है। सो देयर शुड बी द अप्रोप्रिएट असेसमेंट टेक्निक्स बाय विच वी कैन चेक द पोटेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स, कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज ऑफ द विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन। इसीलिए अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स यूज करने हैं, क्योंकि इन बच्चों में डिफेक्टिव सेंस ऑफ साइट होता है। दैट इज वाई वी प्रेफरेबली प्रेफर alternative assessment methods. For example, best evaluation method is oral assessment, क्योंकि इनकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इनकी हियरिंग एबिलिटी नॉर्मल बच्चों जैसी होती है,
इसीलिए हम ओरल असेसमेंट मेथड यूज कर सकते हैं इनकी नॉलेज चेक करने के लिए, इनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को जानने के लिए। जब हम इनका एग्जाम लेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम प्रोविजन होना चाहिए। जिस तरह से नॉर्मल बच्चों का एग्जाम फॉर इंस्टेंस पेपर 2.5 घंटे का होता है और वो सेम पेपर इन बच्चों के लिए 3 घंटे का होता है, क्योंकि हाफ आवर का जो फर्क है वो कंपनसेटरी मेजर विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को, या हम कह सकते हैं किसी भी डिसेबल्ड बच्चे को दिया जाता है। नंबर 12, adopt to physical education according to the National Policy of Education 2020. There should be the provision of 360-degree progress report. 360-degree progress report believes on holistic development. I mean to say you physical development, intellectual development, emotional development, social development, by and large spiritual development of the learner. जितना कि ज़रूरी है करिकुलर एस्पेक्ट एक लर्नर के लिए, उतना ही ज़रूरी है उसके लिए को करिकुलर एस्पेक्ट, बिकॉज विदाउट द सपोर्ट्स एंड गेम्स, आई मीन टू से यू को करिकुलर एक्टिविटीज, वी कैन नॉट अचीव द होलिस्टिक डेवलपमेंट एम। हम ऑल राउंड डेवलपमेंट एम अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमें प्रोविजन बनाना है को करिकुलर एक्टिविटीज का विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए, को करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी प्योरली बेस्ड ऑन द एडॉप्टिव टेक्नोलॉजी। दैट इज व्हाई देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ गेम्स लाइक गोल बॉल। गोल बॉल को बॉल विद बेल भी कहते हैं। ब्लाइंड सॉकर, इट इज ऑल्सो नोन एज फुटबॉल। ब्लाइंड टेनिस, blind cricket, beep baseball, adaptive golf, by and large running and jumping. Number 13, regular communication with parents. Dear students, there should be close communication of teachers, या हम कह सकते हैं स्कूल अथॉरिटीज, with the parents of disabled children, ताकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे उनके बच्चों के रिलेटेड, यानी कि डिसेबल्ड बच्चों के रिलेटेड, उनकी प्रोग्रेस जानने के लिए, डेफिशिएंसीज जानने के लिए, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स जानने के लिए, और किस तरह से उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है। दैट इज व्हाई देयर शुड बी द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड द स्कूल अथॉरिटीज। नंबर 14, counseling services. Dear students, counseling is the fundamental part of education system for visually impaired children. क्योंकि visually impaired बच्चों में mental health related issues commonly पाए जाते हैं due to the vision loss. Visual impairment की वजह से these children are victim of psychological conflicts और psychological disturbances. कॉमनली इन बच्चों में एंग्जाइटी पाई जाती है, स्ट्रेस पाया जाता है, डिस्ट्रेस पाया जाता है, डिप्रेशन, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ कॉन्सेप्ट, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बाय एंड लार्ज लो सेल्फ एस्टीम इन बच्चों में पाई जाती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज से डील करने के लिए, आई मीन टू से यू हाउ वी विल रिड्यूस द साइकोलॉजिकल इश्यूज or resolve the mental health related conflicts, due importance should be given to the counseling. इसीलिए काउंसलर्स को भी अपॉइंट करना चाहिए so that they will properly look after to the visually impaired children. This was all about the today's lecture. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.